Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So today I am going to share with you all the pampering session during Diwali at home. So without any further ado, let's get started. Okay, so the first thing is for body. So for body, I'll be shaving my hair. I'll be also doing body scrubbing and just a little bit more pampering. So yeah, I'll just show you my products in a minute. Okay, so for body scrubbing, I like to use this M Caffeine's Naked and Raw Body Scrub. I just love this. ये literally मैंने second bottle almost मेरी ख़त्म होने को आई है. So I just scrub my body with this and ये drying भी नहीं है. This is very good. This is Gillette's Venus razor in the aloe extract variant. So I'll be using this, and after shower wala things I'll just show you after my bath. Okay, so ये दोनों products and the shower gel I use. So अभी जो भी shower gel चालू रहता है मैं वही यूज़ कर लेती हूँ. So I'm back and my body looks so soft and so smooth. Everything is properly done. So skin को soft and dry नहीं होने का main reason is the body scrub. It is amazing. ये मैंने बहुत सारे family and friends को recommend किया and it is just amazing. This razor, like it is just a savior. मतलब literally waxing कुछ नहीं, no pain, nothing. It is so smooth and easy and it just take 15 minutes and you are good to go. ये मुझे भी बहुत टाइम तक पता नहीं था. My sister introduced to me this to me and I just love this. Now I don't do vaccine and everything because this is so easy method. It's time for aftercare. So this is the one I'm using. This is the body oil. I make sure कि मैं everyday इसको use करूँ after bath because it is important to moisturize your skin. It smells so amazing, you guys. Literally, it smells so amazing. This is in the range Hawaiian Rumba. ये मेरा recent purchase था. So मैं इसको पूरे हाथ पैर सब जगह पे लगा लेती हूँ. And then I also like to massage it like this. थोड़ा de-stress होने के लिए. Just to press some points like this so that pampering का अलग मज़ा हो. Everything which I do is very like affordable and like home. Okay, so it's raat time now. It's time to do some champi. So this is also part of my pampering session. So yeah, I will just get with the oils which I use on my hair to do my champi. Basically mix 3 oils, the coconut oil, olive oil and castor oil, and मैं पूरे scalp में massage कर लेती हूँ. So we are going to do that. Okay, so मैंने अपना oil ready कर दिया है. Now it's time to do a little champi. So the coconut oil नॉर्मल बेसिक पैराशूट का जो रहता है ना वही. ऑलिव ऑयल फ्रॉम फिगारो एंड कैस्टर ऑयल तो यू कैन गेट इट फ्रॉम एनी लोकल ग्रोसरी स्टोर. कुछ तो 50 रुपये का आता है, समथिंग 40-50 के रेंज में. सो पहले मैं रैंडमली पूरे स्कैल्प पे लगा लेती हूँ एंड देन आई डू द मसाज. सो दिस इज हाउ आई डू माय चम्पी. Okay, so for massaging, I like to like this ऐसे करके to press inside. Okay, champi is done. अभी मैंने plaits बांध लिए हैं and now tomorrow I'm going to wash my hair. So hair pampering will be done tomorrow. Good afternoon guys. So this is the next day or now it's time to do some face pampering and some hair pampering. मैंने अभी फ़िलहाल तो मेरे eyebrows और upper lips पार्लर दीदी से करा ली है. So now we'll just do some face. So I just washed my face. अभी मैं steam लेने वाली हूँ
After steam, I'll be just applying some hip hop strip. Okay, so ये टाइम मैं फेशियल नहीं करने वाली बिकॉज मैंने अभी रिसेंटली किया था. So if you guys want to see की facial things, so it is on my Instagram. You can check that out. But आज मैं कोई नए tips and tricks try करने वाली हूँ. So let's get started. Okay, so steam is done. So अभी I'll be just using this hip hop strip on my nose and पूरे बाकी के face पे I'll be using my another mask. So this is, I only have one strip left. मैंने बाकी सारे use कर दिए हैं. Okay, so जब तक ये है तब तक I'll be using my L'Oreal's clay mask. This is the detoxify mask. ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है. लास्ट यूज़ बचा है इसका. Okay, so this is done. अभी इसके बाद we'll wait for 10 minutes. I feel ये सूखने तो लगा है but 5-10 minutes और and then we'll be cleaning this every. Okay, so it's 10 minutes. ये सब कुछ सूख गया है properly. My skin feels squeaky clean. So अभी just to do some extra thing, I'll be using this Nivea's 5-in-1 Total Face Cleaner. So ये this is my third tube. I just love this so much. I'll just take this much amount and पूरे face पे लगा दूँगी. This is so nice. तो evenly मैंने spread कर दिया. I'll just wait for 5 minutes and then we'll just use a little water and massage. ये मैं usually. Okay, so it is done. मैंने थोड़ा पानी लेकर gently massaging. So I'll just wash this and I'll be just right back. Then few more steps to go. So I just wash this. अभी मैं eyes पूरे इस पे लगाऊंगी just to calm my skin down. And okay, so I just finished my shower. So अभी हम करेंगे hair spa. तो मेरे बाल डैम्ड है, गीले नहीं है, डैम्ड है. So I'll just show you my hair mask. अगर if you don't have a hair mask, what you can do is कि you can just mix a little bit of your conditioner. उसके अंदर थोड़ा सा 3-4 drops of serum डाल दो and you are good to go. So this is also how you can use your conditioner. So I am using this Schwarzkopf a hair spa essence enriched cream mask for damaged / crisp hair. 400-500 and ये इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है. So you can use this, you can get this as well. मैं इसको इसके अंदर थोड़ा सा डाल के ले रही हूँ. This is it. This is how my hair mask looks like. So अभी इसको मैं पूरे scalp and मेरे roots length पे लगा दूँगी. I'll just massage it. So basically apply करने के बाद you need to massage it for 10-15 minutes. Post mask जैसे pre mask भी आता है but I don't like to use pre mask क्योंकि pre के लिए I have already like क्या बोलते हैं oil and everything, so I don't like to use that. But there is also one pre mask of honey and banana, वो भी बहुत अच्छा लगता है. So that is also there. If you want to use a pre mask then you can also use that. So basically you need to take banana, mash karo, add some honey and apply it on your scalp and lens and just keep it for half an hour to 45 minutes. Wash it with shampoo, conditioner. You are good to go. वो भी बहुत स्मूथ कर देता है बाल को. So there are different options. You can try any of them. Okay, so for massaging, what you can do is
ओके सो मैंने ये कर दिया हेड मसाज. नाउ इट्स टाइम फॉर सम स्पा. ओके सो स्टीम भी लेके हो गया. सो नाउ वी हैव टू कीप इट फॉर 10 मिनट्स. सो व्हाट आई विल डू इज़ मैंने एक कोई भी टाल को वेट करके उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया था फॉर 10 मिनट्स. सो नाउ आई विल जस्ट कीप इट ऑन माई आईज लाइक दिस एंड आई विल सिट बैक एंड ओके. सो मैंने बाल वॉश कर लिए. मैंने सीरम भी अप्लाई कर दिया. नाउ इट्स टाइम फॉर सम sheet mask. This is the Tony Moly ka sheet mask in the variant aloe vera. So this is my Pitara for nail polish. I'm thinking to go with these two. दोनों मिनीसोस है. दिस इज़ द ग्रे वन एंड दिस इज़ द चमकी वन. सो आई एम थिंकिंग कि एक चमकी, एक ग्लिटर वाला एंड बाकी का सब नॉर्मल. सो दोनों हाथ पे है ये दोनों. सो फिलहाल माई नेल कंडीशन इज़ नॉट गुड. मैंने सोचा था प्रॉपर मैनिक्योर पेडिक्योर कराऊंगी पर एज़ यूजुअल मैंने अपने नेल्स पूरे खा गई हूँ. So we'll just do it at home only. This is the final result. I hope you guys enjoyed it. मैं सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी इफ़ यू वांट टू चेक एनीथिंग आउट. डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.